Let's throw it across. जी राशिद भाई, नहीं बात ठीक है आकिब की, लेकिन थोड़ा सा मार्जिन हम इंडिया को देना चाहेंगे। कंडीशन जो होती है उसके लिए न्यूजीलैंड जो क्वालिफाई किया है वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, वो बिल्कुल कैलकुलेट करके खेलते हैं। अगर यही रिजल्ट न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में होता तो हम एग्जिट समझ सकते हैं, पाकिस्तान का अगर हो जाए या इंडिया का हो जाए तो, लेकिन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया या पाकिस्तान आउट हो जाए सेमीफाइनल से तो वो हमारा भी अगर टीम बाहर होती है तो हमें डाइजेस्ट नहीं होता। सेम चीज़ इंडिया में भी है कि जो कंडीशन थी उसके लिहाज से न्यूजीलैंड से नहीं हारना चाहिए। चलो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है, टेंस होता है, हाई वोल्टेज गेम होता है, वो मान लेते हैं कि हो सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड वाला जो मैच है ना वो इंडिया को हारना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लेकिन वेस्ट इंडीज को भी कहते हैं इन कंडीशन में बेहतर, पर उन्होंने शायद बिल्कुल टीम सिलेक्शन ही अच्छी नहीं की कि हम जा ही नहीं रहे उनकी तरफ कि उनके बारे में भी सोचा जाता। अदरवाइज इन कंडीशन में वो भी अच्छा खेल सकते थे। वेस्ट इंडीज वैसे इंडिविजुअल अच्छे प्लेयर थे सारे, ब्रावो हो जाए, क्रिस गेल हो जाए, पोलार्ड है, रसल है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो कि फ्रेंचाइज क्रिकेट लास्ट 15 ईयर्स से खेल रहे हैं, लेकिन अब टाइम नहीं था उनका। जो सिलेक्शन है वो सही वो इतनी अच्छी नहीं थी। यंग प्लेयर्स होंगे वेस्ट इंडीज में जो कि नहीं लेके आए और क्लिक नहीं हुए। आपको होता है कि क्लिक हो जाता है, बॉलिंग नहीं है उनकी, बैटिंग है ठीक है, मास्टर ब्लास्टर है, लेकिन बैटिंग नहीं थी उनकी, वो बॉलिंग नहीं थी। 125 130 पे आप मैच नहीं देखते, स्पिनर नहीं थे। अकील हुसैन था एक साल में, वॉर्ड्स था, वो इनएक्सपीरियंस प्लेयर थे। लाइक लास्ट वर्ल्ड कप देखते हैं, बद्री, नारायण, सैम्यूल, तो डिफरेंट टीम थी वो यंग थे। और जितने भी प्लेयर थे 7 साल पीछे चले जाए या 5 साल पीछे चले जाए, यंग थे वो, तो वो डिफरेंट था। और अब वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑन पेपर अच्छी थी, नाम बड़े बड़े नाम थे, लेकिन कारकर्दगी वो आपके सामने 2-4 पॉइंट के साथ वो गई है, जो कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप में शायद डिफरेंट टीम हो। और एसोसिएट नेशंस के ऊपर आपने काफी बात की है, उनके कोई ऐसा प्लेयर जिसको आपको लगे कि आपको इम्प्रेस किया है? कंपलमैन जो है ना, जैसे बात हो रही थी कि जरूर कोई ना कोई फ्रेंचाइज लेगी, चाहे वो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो, कैरिबियन लीग हो, तो वो कुछ प्लेयर नजर आए। एरसमस है या दो वॉट है जो कि खेले T10 में शायद जा रहे हैं खेलने, अफगानी प्लेयर हैं, ये खेल रहे हैं ऑलरेडी T10 और पाकिस्तान में पीएसएल खेल रहे हैं। और कुछ और अफगानी प्लेयर को हौसला मिलेगा, खेलेंगे जाके आईपीएल में खेलेंगे या कहीं और खेलेंगे। उनके पास स्पिनर का स्टॉक है, नूर है जो कि इस टीम में नहीं था, वो कराची किंग का हिस्सा है, कैश है, वो खेल रहा है, बहुत सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं लोग। इसमें ये है कि ये टीम वैसी है कि कुछ प्लेयर्स इनके फ्रेंचाइज में जरूर जाएंगे, इस वर्ल्ड कप से बड़ा बेनिफिट होगा उनको, बहुत बेनिफिट होगा। अजहर भाई, आपने ओवरऑल वर्ल्ड कप को कैसा देखा? कौन सी टीम्स, कौन से प्लेयर्स आपको इम्प्रेसिव लगे? देखें, सबसे पहले तो 4 टीमों की बात कर लें। अगर जो 4 टीमें पहुंची हैं, डेफिनेटली सॉरी कि साउथ अफ्रीका नहीं पहुंच सकी, जो एक मैच वो बुरा खेल रहे हैं, 4 मैच जीतने के बावजूद अगर वो नहीं पहुंच सकी। अगर आप इन चारों टीमों को देखें ना, तो इनकी बॉलिंग लाइनअप देखें। अगर आप इंग्लैंड के पास भी बॉलिंग लाइनअप, स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है, न्यूजीलैंड के पास भी है, पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया, सबके पास जो है ना बॉलिंग लाइनअप, 5 बॉलर की जो बात कर रहे थे या 6ठे बॉलर की बात कर रहे थे, तो इन सब टीमों के पास वो वाले मौजूद थे। साउथ अफ्रीका के पास भी बॉलिंग अच्छी थी, अनफॉर्चुनेटली पहला मैच वो हारे हैं तो उसकी वजह से उनको लॉस हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर उनकी टीम देखें, जिस तरह के उनके सर्कमस्टांसिस थे, जो डिकॉक का केस हुआ उसके बाद जो उनकी टीम दोबारा जल हुई, और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट में क्रिकेट खेली है, आई थिंक कि वो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है, तो वो उनके साथ थोड़ी सी हुई जाती। इंडिया वाला मैच जैसे बात हुई कि इंडिया की टीम जो है वो, अगर आप बॉलिंग देखें, उनकी बैटिंग तो उनकी बहुत तगड़ी थी हमेशा, सब कोई डाउट नहीं करता, लेकिन बॉलिंग में जैसे हम बात कर रहे थे कि विकेट टेकिंग ऑप्शंस जो है ना उनके पास कम थी, क्योंकि अश्विन भी पहले मैच में नहीं खेले। अश्विन अगर शुरू से खेलते तो शायद थोड़ा सा डिफरेंट होता, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, जो हमने देखा अभी। गो कि वो ऐसी टीमों के खिलाफ खेले हैं कि उनका कैलिबर उनसे ज़्यादा अच्छा था, लेकिन ओवरऑल बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने, उनकी बॉल में जान भी थी और वेरिएशन में भी जान थी, तो आई थिंक कि वो अगर होता तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता था। बाकी श्रीलंका जो है, उनकी टीम में एक स्पार्क नज़र आया कि फ्यूचर में जो है ना वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेले। अगर हम सारे क्वालिफाइंग राउंड भी देखें और उसके बाद जो है, तो एक अच्छा हुआ कि फ्यूचर में वो एक अच्छी टीम बन सकती है। और ओवरऑल जो है, जैसे बात की कि जो है मिनोस टीम थी, उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर आए हैं, उनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म था कि वो इस लेवल पे आके
अपने दुनिया को बता सकें कि उनमें क्या पोटेंशियल है, किस तरह की स्किल्स हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली अब पूरी दुनिया में लीग क्रिकेट इतनी हो रही है, T10 भी आ गई, 100 भी आ गया, तो डेफिनेटली इन प्लेयर्स को और मौका मिलेगा। जैसे हमने देखा डेविड वीसा जो हैं वो पूरी दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं, रायन टेंडुलकर, ठीक है, वो नीदरलैंड से खेलते थे, ही प्लेड अराउंड द वर्ल्ड T20 फॉर्मेट, तो उनको डेफिनेटली काफ़ी सारे प्लेयरों को इससे फ़ायदा होगा। So a lot of the associate nation players will benefit from this. They will be picked up by leagues, and through them, of course, some of the trickle effect can happen in their team. But as Aaqib mentioned, that this boards need to invest in the infrastructures as well. Yeah. And it'll be interesting to see how much interest there is actually, because it's what I call what we call in the UK the Wimbledon effect, which is for 2 weeks every year. Sorry to change sports briefly, but yeah, everyone watches tennis for 2 weeks. Wimbledon is fantastic, and you see the final, and you see Federer and Nadal and Djokovic, and now we've got this girl Emma Raducanu who's just won the US Open. But for 2 weeks, everyone plays tennis, and tennis is great. Yeah. When you have a World Cup like this, and people from Namibia, from Scotland, they all get this exposure, and we go, oh, I wonder if Trumperman can make it into a league. Also very good, but it depends. It could be months before the next draft. Yeah. It could be months before people sit down and think, well, who should we have? And the temptation could be just to look at the major nations again and look at the sort of the usual suspects. I mean, you guys at PSL, where are you going to be looking? How many do you reckon of these people that we've seen from, for instance, Namibia and Scotland would have a chance of playing a good part? David Visa will come back. Well, he's got a 20-year he's got a 20-year contract, hasn't he? He'll be automatically retained. But look, depends. In good conditions, I would say, if the PSL happening in Pakistan, even then, for the bowlers like seam bowlers, it's difficult to survive. Teams, leagues like England, hundreds or big bashes, I think it's too high standards. Maybe smaller leagues somehow, because when franchises look at it, they want professional players come and perform. Sure. And mainly they put heavy money on overseas players because there are a lot of talent in Pakistan, young talent. Something like Troubleman. I think it will be tough that any PSL team will attract towards him. Yeah. I think it's hard for anyone because we got because so in much Pakistan, talent. Well, yes, you but will find that's kind of the point. question, Yeah. yeah. There is the dream Yes. that these guys can escalate their careers and join these leagues. Yeah. But then there's the reality that someone very hard-nosed who's paying for them Yeah. is going to say, oh, we're going to get value for money from Yeah, these for guys. him, it's very difficult to come in PSL team, but he can go to Bangladesh League, Other team. Caribbean Yeah. League, Yeah. and Pakistan has like 100 bowlers who Yeah. can bowl Yeah, 130 plus. Yeah. and I think this guy Mark Watt, I think he will definitely go with Yeah, a lot of he's- teams because left arm spinner and like on He playing can in bat Pakistan also. or anywhere. And one's got to remember also that it's not all the time that some of these top players are available. Yeah. So this guy could play a part, and especially with so many of these T20 tournaments around the world. He could And attract also, something. Yeah. some of these guys are they do actually have jobs. So yeah, some of them have given up their job for a month to come and play. That's the other side. So do they want to? It depends how part of much this. money they get. Yes. If they get a diamond contract, then they might come and play again. All right. Well, let's allow them to dream for now. But that is the end of the road for Namibia today. And as they have said themselves, they've had a great time. Qualifying for the Super 12s was their absolute achievement. It's the best they've ever done in world competition, so they will take those memories home. Right, we are due a break before we come back and start looking at the nitty-gritty of today's game. Game on Hay.